ये चीज तुमको आईआईएससी में नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ एमएस का और भी 4 है, एमएस के हम्म लिए वीडियो आ रहा है, ठीक है। एमएस का तो और भी ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर, हाँ बट सोच के काउंसलिंग में हाँ देखना, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी होता है काउंसलिंग। हाँ डे ये 1 से पहले, दिसंबर डे 1 हाँ से पहले जो करना है। playing basketball who never यस, used to touch the ball. Some people playing badminton whole day, whole out. After placements, they are like free birds. So you are doing hard work. So you enjoy one more year and prepare for placements. And the test will be offline this time. You will be called to IIT Bombay. If you want to prepare, then you have to. हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है ऋतु प्रभु सरकार। ही इज़ डूइंग एमटेक आरए फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे सीएससी डिपार्टमेंट। तो तुम लोगों का बहुत क्वेश्चंस रहता है कि एमटेक आरए एंड एमटेक टी के डिफरेंस क्या क्या है, क्या क्या स्कोप रहता है एमटेक आरए में, पूरा रिसर्च ओरिएंटेड है कि नहीं, तो प्लेसमेंट्स कैसा होता है, तो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ऋतु प्रभु सब कुछ बताएगा। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है तुम लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब कर देना एंड पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है ये वीडियो। So Ritu Prabhu, please introduce yourself a bit. So hello everyone, I am Rita Prabhu and I am a third year MTech student at IIT Bombay. So basically I wrote GATE in 2021 and secured a rank of 270. After securing rank, I got call for interview process at IIT Bombay for CSAT System Administration Research Assistant. So I cleared that interview and I finally got into IIT Bombay, and from there I am continuing and now I am in my third year, and I will try to clear all your doubts and whatever you have problems. So what you can do, even after the video is over, you can post your comments in the comment section. So I will try to reply it myself. Yeah. So ऋतु प्रभु, इस बार के मतलब तुम्हारे वक्त जब तुम 2021 में एमटेक आरए के लिए अप्लाई किए थे, तब सिर्फ इंटरव्यू था ना? या तो एक्चुअली क्या हुआ था, उस टाइम लॉकडाउन पीरियड था, तो उस टाइम रिटन टेस्ट या फिर कोडिंग टेस्ट लेने का उतना स्कोप नहीं था. So what they did is they directly filtered out by GATE score, something cut off of 770 they have put, and then they called for interviews, online interviews, and then by clearing the online interviews we are mostly selected. ओके ओके। तो इस बार के लिए क्या क्या रहेगा, कि सिर्फ इंटरव्यू रहेगा या कोडिंग टेस्ट भी रहेगा, मतलब? हाँ, सो एज फार एज आई नो कि इस बार शायद एक कोडिंग टेस्ट भी होगा, लास्ट टाइम भी हुआ था, and most probably the cutoff for that coding test will be somewhere around 650. So if your score is around 650, you will get a call to visit IIT Bombay, and mostly the test will be offline this time. You will be called to IIT Bombay and probably will be given accommodations. So it will be on 11th of May according to official notifications. So on 11th of May you will be having your written or coding test. So what will happen if you clear your coding interviews, अगर तुमने coding interviews clear कर लिया तो शायद तुम्हारा 12th और 13th मई को तुम्हारा इंटरव्यूज भी होगा, और अगर नहीं हुआ तो वहां से तुम लोगों को मतलब निकलना होगा आईआईटी बॉम्बे से, और नहीं तो और दिन अकोमोडेशन मिल जाएगा, और अगर तुमने क्लियर कर लिया वो भी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड टू आईआईटी बॉम्बे. या तो बहुत सारे बच्चे का डाउट रहता है कि कैसे प्रिपेयर करिए कोडिंग टेस्ट के लिए एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी गेट के लिए उतना पढ़ भी नहीं रहे, गेट का सिलेबस। तो उन लोगों के लिए थोड़ा टिप्स दे दीजिए कि कैसे क्या पढ़ना है इस एक महीने में। सो मेन टिप है कि तुम लोग कंटिन्यू करते रहो, मतलब आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन इज ओवर, जस्ट कीप ऑन स्टडिंग, रिवाइजिंग दो सब्जेक्ट्स. फॉर द कोडिंग इंटरव्यूज यू कैन प्रिपेयर लीड कोड मीडियम प्रॉब्लम्स, you can prepare medium level DP questions or linked list, those type of questions, linked list, arrays, strings, those type of questions you can prepare. I don't think they will ask very hard level questions. From the trees and graphs, I don't think so. And one more thing, I think it will be 70% of based on gate score, and 30% will be based on your coding round. So doing this, they will prepare a score, and on the basis of this score, they will call you for interviews. Okay. So now about the interviews में mostly depends तुम किस position के लिए apply कर रहे हो. So there are two types of RAs. So one is RA and institute RA, where you are called by the institute and you work for the institute. So there are two types of institute RAs. One is the CSAT RA and another is the web team RA. So in CSAT RA you basically maintain the departmental servers, departmental infrastructure, departmental labs, everything within the department you are responsible under the CSAT RA. Another RA, institute RA, is the web team RA, where basically you take care of the website, CSE website, anything new you have to upload, so all that goes through you. So that is a position of responsibility. You can it will be an experience. It will be a great experience. You will get a lot of learning and a lot of experience there also. So in which RA you are in? So currently I am a CSAT RA. So
I joined as a CSAT RA, and I'm now continuing for 3 years. Yeah, and you are about to leave right now. Yeah, I am probably leaving in June mostly. Yeah. So for the interview, which subjects they will focus more? So let's say you are appearing for the web team RA. So in that kind of interview, you will be asked questions mostly on website development. Maybe if you know React or HTML, CSS, JavaScript, that will be a good Add-on. Yeah. that will be an add-on. Other than that, the basic GATE subjects you will have to prepare everything. Sometimes they may ask about networks, OS, DBMS, mathematics, and all. I don't think they will ask in Institute RA interviews. Yeah. And for CSAT interview, if you want to prepare, then you have to go through Linux very well. So you have to know how what commands are used for which purpose. Suppose I want to find IP address of a machine. So how will I find it? Yes. So how ping works, how traceroute command works. So this kind of questions you have to be hands-on. You have to know the theory as well as the basics. So how RSA works, how SSH works, what is SCP, secure copy, rsync, all these things you can prepare. Basically, you can take a short Linux course, and mostly that will work. बेसिक लिनक्स कमांड सब आना चाहिए. हाँ, बेसिक लिनक्स का कमांड सब आना चाहिए. अगर लिनक्स पे हैंड्स ऑन अगर हो तो वो बेस्ट है. हाँ. तो ये सब नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 साल है अभी इंस्टीट्यूट में, तो पता है कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं. तो ऋतु प्रभु को सब कुछ पता होगा, तो लिनक्स बहुत अच्छे से देख के आना. एंड जो सिस्टम्स का सब्जेक्ट्स है वो भी बहुत अच्छे से देख के आना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आता है. गेट के तरह मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएगा इधर, तुम्हें कॉन्सेप्ट में पूरा डीप में घुसा जाएगा. कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए. तो गेट में जो पढ़े हो वो तो अच्छा ही है, बट अभी क्या ट्राई करो कि जो पढ़े हो ना उसका कॉन्सेप्चुअल जो चीज है वो और भी डीपली थोड़ा पढ़ लो, कि ओएस में डीप में थोड़ा घुसो. You can actually take any of the system administration courses in YouTube. Any 4-5 hour video will be enough mostly. But don't pressurize yourself, because you have already achieved great rank, and I think you don't need to practice those networks like GATE subjects. I think if you have cracked GATE and you have got rank under 800,000, then I think all your subjects will be clear. So only add on, you have to learn Linux. You have to learn it very well. So if you are able to learn it well, then I think you will get it. Yeah. So Rituprabhu, I heard another category of RA program, that is RAP. So what is that? So RAP is actually research assistantship under some project. So basically what happens, so you are admitted under some professor under some project. So what happens, throughout the entire 3 years of this duration, you are only entitled to that project. Your master's thesis project is also based on that, and also your stipend comes from the project fund. So that is basically the RAP. So you are basically tied to that project. But the difference with the CSAT RA or other institute RA is there you can select your own guide. But I don't think that facility is provided under RAP. Okay. So the MTech RA program is only for the system side course, or for both theory and AIML also? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिस्टम साइड. बस तुम्हारा जो एक्स्ट्रा आरए का काम, मतलब एक्स्ट्रा जो स्टाइपेंड का सोर्स है, वो काम तुम्हें सिस्टम्स का काम करने से मिलेगा. लेकिन तुम एमटीपी किसी भी सर के अंदर, किसी भी मैम के अंदर कोई भी गाइड चूज कर सकते हो, कोई भी पूछ कर सकते हैं. मतलब AIML भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिस्टम्स में घुस जाओगे. AIML का भी बहुत स्कोप है, तो कोई चिंता मत करो. मतलब कोई भी. फॉर एग्जांपल मेरे बैच में 4 लोग थे, उनमें से 2 सिस्टम्स में और 2 AIML कर रहे हैं. सो ऐसा कुछ नहीं कि तुम सीसैट में आ गए या फिर इंस्टीट्यूट आरए बन गए तो तुम्हें एमएल में काम करना होगा, सिस्टम्स में ही काम करना होगा. तो दैट इज एग्जैक्टली एंटायरली योर चॉइस. सो तुम जो मर्जी कर सकते हो. बस तुम्हारा स्टाइपेंड का सोर्स वो आरए शिप रहेगा, जो तुम्हें हफ्ते में मोस्टली 20 आवर्स लिखा रहता है, बट मोस्टली वो नहीं करना होता है. मोस्टली अराउंड 10 आवर्स और 12 आवर्स करने से ही वो हो जाएगा. इतना स्टाइपेंड्स के बाद जब आ ही रहा है तो स्टाइपेंड्स के बारे में बता दीजिए, क्योंकि एमटेक टीए में हम लोग का स्टाइपेंड तो फिक्स्ड रहता है 12,400, बट आरए में थोड़ा ज्यादा मिलता है. थोड़ा ज्यादा काम करता है तो थोड़ा ज्यादा भी मिलता है. तो थोड़ा स्टाइपेंड के बारे में ऐसा है कि जब तुम आओगे फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में एमटेक टीएस का मोस्टली रहेगा 12,400 per month. Yes. But MTech RAs will get around 13,400, 1,000 extra, and this stipend will increase every year. So in the second year you will get 14,400, and the third year or final year you will get 15,400. Being jealous.
So Ritu Prabhu, what was the closing rank of your year for the MTech RA admission? So as far as I remember, the last closing rank for Institute RA, it was around 330 or 350. Actually, they put a gate cutoff of around 770. Yes, So because in that year I think there was no coding test for yeah, the there was present. no coding test. There was Yeah. just direct interview because of COVID and everything. Mm. So the cutoffs are a bit high. Mm. But this year or last year, the cutoffs will be as less as 650. So Yes. many people will get chance to go for the coding rounds, and hopefully you will crack it. So I know one person who has rank around 600, and he or she has made it to IIT Bombay CSAT RA in 2023. in 2023. तो गाइज मतलब अगर 600 700 800 भी रैंक है ना, हाँ, तो अप्लाई कर ही देना। ये ऐसा मत सोचो नहीं कुछ नहीं मिलेगा भाई, आईटी बॉम्ब में मिल सकता है। तुम सोचो कि 800 रैंक में अगर आईटी बॉम्ब में मिल गया तो और क्या ही चाहिए। और क्या ही चाहिए। तो अप्लाई करना मतलब ये गलती कभी भी मत करना कि नहीं मिलेगा पहले से अप्लाई बंद कर दो। अप्लाई ऑब्वियसली करना, या फिर आके कोडिंग टेस्ट ऑब्वियसली देना, उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि स्कोप बहुत रहता है तुम्हारा। अगर 70% गेट स्कोर से ले रहा है, तुम्हारा कोडिंग टेस्ट बहुत अच्छे चला गया, तो कोडिंग टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो उसमें अगर बहुत अच्छे चला गया ना, तुम्हारा स्कोप बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उधर देखते हैं कि तुम्हारा अगर स्ट्रांग है बहुत कॉन्सेप्ट्स, तो प्रोफेसर्स लोग ले लेंगे तुमको इंटरव्यू में। हाँ, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो तुम इजीली इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। यस, एंड अगर तुम एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करोगे तो ऑब्वियसली तुम इन हो जाओगे। हाँ, तो ये गलती मत करना कि अप्लाई मत करना, अप्लाई ऑब्वियसली करना। 200 से 100, 200 से आई थिंक 200 से 1000 तक जो रैंक है सब अप्लाई कर दो। इवन 1500 आल्सो वी डोंट नो व्हाट हैपेंस, तो कर दो। जस्ट तुम्हारा आईटी बॉम्बे एमटेक एमएस सब कर दो। हाँ, एमटेक टीए, एमटेक आरए, एमएस। एमएस का और भी 4 है, एमएस के लिए वीडियो आ रहा है। ठीक है, एमएस का तो और भी ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर। हाँ, बट एमएस के लिए पूरा पॉडकास्ट में करूंगा, इसके बाद में ही आएगा एमटेक एमएस का वीडियो। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड ये वीडियो और भी शेयर करो बाकी फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्या क्या रहता है एक्चुअली, कौन से रैंक में क्या अप्लाई करना चाहिए। So now we'll be discussing what are the key differences between the MTech TA and MTech RA program. So Ritu Prabhu, is the duration of MTech RA program variable or it is fixed duration? No, actually MTech RA duration is fixed. It is for 3 years. So the first 2 years you will be focusing on your coursework, and the final year you will be having your master's thesis project, and you will be having your seminar mostly in the 4th semester or 3rd semester. That is your choice. You can take early seminar also, and you will sit for placements in your 3rd year, 5th sem. So Ritu Prabhu, how many courses and what is the course curriculum structure of MTech RA? Is there any difference from the MTech TA course, or is it the same? So the good fact is there is no at all difference between the coursework between MTech TA and MTech RA. Okay. So MTech TAs also do 11 courses and they get 2 years time, and MTech RA do 11 courses only but they get 3 years time. So the extra year they are supposed to do RA work. Yeah. So they are supposed to do 8 hours of TA work and we are supposed to do 20 hours of RA work. So the institute gave us 1 more year because we are doing RA work. So you enjoy 1 more year and prepare for placements and do the RA work as well. And enjoy the campus life. Enjoy the campus life as well. Yeah. एमटेक आरए बोलने से ऐसा लगता है कि ये थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है, ये कोर्स वर्क, मतलब ऐसा कुछ है क्या? ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है या सेम टाइप का है एमटेक टीए के लिए? Actually not. MTech RA is not a research oriented course, research oriented degree. So the name is somewhat misleading. So RAP, you can say that it is somewhat of research oriented because you are added under a project and entire duration you are working under that project. It may be a research project or some other running software development project. So that is RAP. So that we can say that it is somewhat research oriented, but the institute RAs are not research oriented. They are mostly coursework oriented, but if someone wants to pursue research, so they can do it in their 3rd year and seminar in the 4th sem. So it totally depends on you. So like if in MTech TA also, if you want to do research, you can do in your final year. Yes. So similarly for MTech RA, you are not bound to do any research, but if you want, so you can do it in your 3rd year. Actually not bound, you are bound to do some thesis, but that depends on you what quality of research you want to make. Okay. So is there any credit for that research thing?
Yeah, actually, there are 50 credits for the research work in the pre-final semester and Okay. 40 credits in the final semester. Okay. I think this is same as the MTech TA also. Yeah, similar Yeah. to MTech TA. The Yeah. research work is exactly similar to MTech TA. So it is like MTech TA only, but the coursework duration is a bit more. So the research duration is same, exactly 1 year, same as MTech TA. Okay. Got it. तो अभी आते हैं सबसे हॉट टॉपिक में, आईटी बॉम्बे एमटेक आरए प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो तुम लोग को ये आई थिंक क्वेश्चंस रहेगा ही कि एमटेक टी एंड एमटेक आरए में कोई प्लेसमेंट का डिफरेंस रहता है कि नहीं। तो दित्य प्रभु, was there any difference between the placements of MTech TA and MTech RA? Because Yeah. you have also sit for the Yeah, I placements with sat for us. placement this December. So basically, the placement is dependent on the student. So by opportunity wise, the opportunities which you get under MTech TA and MTech RA exactly same. Yes. The companies don't know if you are a TA or RA, or they don't ask for it also. They just know that you are MTech or Yes. maybe you are MS or BTech. So according to opportunities, you won't be differentiated. But it depends on your skill, how you have developed your resume over the 3 years or 2 years. That is the key factor for your placement. So if you work hard, if you have enough luck on the current placement days, so you will get a good placement. That's it. So no difference in opportunities, no differentiation in the coursework, no differentiation in placements between MTech TA and MTech RA. तो जो जो स्टूडेंट्स एमटेक आरए में थे, इस बार उन लोगों का प्लेसमेंट स्टेटस क्या है? So almost all people under MTech RA got placed. So the average base is around 20 LP and average CTC around 33 or 32. Yeah, so you will not be differentiated. So you will get enough opportunities. Yes. So don't worry. Just focus on your studies and placements also you will focus. But don't worry about the opportunities. You will get same opportunities. Yeah. Rita Prabhu, how was your placement experience of this year? Yeah, so talking about my placement experience, so the placement experience is almost similar to all other 100 students who sat for placements. So ऐसा होता है कि तुम्हारा अक्टूबर में सारे ऑनलाइन असेसमेंट्स होता है और जितने तुम क्लियर करोगे तो उसके बाद तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट आएगी। तो कभी कभी नहीं भी आएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स में भी नहीं आएगी, तो उसमें डिसहार्टेंड नहीं होना। तो उतना जो तुम्हारा हाथ में है, जितने तुम्हारे शॉर्ट लिस्ट आए उनको ही अच्छे से प्रिपेयर करना। और अगर तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट जल्दी आ जाए दिसंबर से पहले, तो ट्राई करना कि उसको उस कंपनी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन निकालो, तो वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। और जो फाइनल में लाइक डे इन डे आउट इंटरव्यूज होता है, उसके लिए तुम टारगेट करके प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट जो पहले इंटरव्यू हो जाते हैं अक्टूबर में, सो फॉर दोज कंपनीज यू कैन ट्राई टू डू कस्टमाइज्ड प्रिपरेशंस। सो मेरा कुछ जिनमें शॉर्टलिस्ट हुआ था, मैं उनके लिए एक्चुअली आई थिंक 4 और 5 में शॉर्ट लिस्ट और वेट लिस्ट मिला के हुआ था। Okay. तो उनमें से मैंने डे 1 में 2 इंटरव्यूज दिए थे, तो जिनमें से मेरा एक हुआ था। तो डे 1 में एक्चुअली मोस्टली सारे कंपनीज एसडी के रोल्स के लिए ही होते हैं। तो वहाँ पे तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे और तुम्हारे कोर्स के रिलेटेड सब्जेक्ट भी पूछे जाएंगे। एंड जो अदर टाइप के कंपनीज है लाइक एम्बेडेड रोल्स एंड लाइक हार्डवेयर रोल्स या फिर जो सिस्टम्स के रोल्स, उसके लिए तुम्हें ओएस, सी प्रोग्रामिंग, then C knowledge and other architecture things, those things you have to learn very well. So if you cover all things, so you will be able to get a good placement. And if you are from AI department, so I am not from AI department, but if you are from working on AI, so your interview will depend accordingly. And also sometimes it also depends on your MTech thesis. So suppose if your MTech thesis has something in common with the company, so that company might ask you regarding that MTech thesis project. So if they like it, maybe they may not ask you SB questions also. मतलब कंपनी का इंटरव्यूज बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है कि कोई कंपनीज तुमको पूरा प्रोजेक्ट्स में घुसा दे, तुम्हारा प्रोजेक्ट्स कैसा चल रहा है, क्या क्या यूज किया हो, क्या क्या टेक स्टैक यूज किया हो। और कोई कोई कंपनीज प्रोजेक्ट से एकदम ही ना पूछे, पूरा डीएसए टाइप क्वेश्चंस, ओएसडीबी में ये सबसे क्वेश्चंस पूछते। तो कैसे जाएगा वो किसी को नहीं पता, बट हम लोग को पूरा प्रिपेयर रहना चाहिए डे 1 से पहले, दिसंबर डे 1 से पहले जो करना है विथ ओएस। मतलब हम लोग का कैसा होता है कि नवंबर लास्ट वीक में हर दिन 3-4 ऑनलाइन असेसमेंट चलता है। तो और वो टाइम बहुत हेक्टिक रहता है, बहुत मतलब तुम प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है उस टाइम। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि तुम सोचो अगर 2 घंटा करके टेस्ट रहेगा 4-5, वो भी जाके देना पड़ता है, मतलब ऑफलाइन टेस्ट होता है हमारा।
ठीक है और तो ऊपर से सारे टेस्ट का शॉर्टलिस्ट भी नहीं निकलेगा उसका। हाँ हाँ, फ्रस्ट्रेशन भी अलग होता है, सैडनेस होता है, और हो गया तो एक्साइटमेंट अलग होता है। हाँ तो सब कुछ मैनेज करके ही होता है प्लेसमेंट। सो इट्स अबाउट कीपिंग योर माइंड कूल एंड डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। yeah, I think it is the one time experience of life. It is a definitely a one time experience. So you will have fun, you will have a lot of emotions, a lot of ups and downs, but after all, after you get a place, everything will be worth it. Yeah. इंटर्नशिप अलाउड है क्या एमटेक आरए में? So internship actually allowed नहीं है in most of the cases, 99.9% cases MTech Okay. TA और MTech RA में। Hmm. But in some rare cases like तुम कोई प्रोफेसर के अंडर हो और उनके अंदर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और वो प्रोजेक्ट कोई कंपनी में है, तो in that case the professor can allow you to do the internship work for some time under that particular company. But that is also very rare. Like out of 100 students, maybe 2-3 people do internships and get some TPO. So we should take the general case. So mostly it is not allowed. Okay. And I think it is not that much bad because you are preparing for your ultimate goal, that is the placement. Yeah, because what you are doing internship, or you are doing it for getting placement, some experience. So about the experience part, you can get experience by doing your MTP as well. If your MTP is good and you are putting efforts into it, then it can give you some different kind of experience which you might not get in internship as well. And the placement IIT takes care of. So if you have worked hard, so you will get a placement. Yes. So Ritu Prabhu, you are now graduating from IIT Bombay and you have spent 3 years here. So how was your experience and was it worth it? Yeah, so the overall experience was amazing. So in the first year, actually the pressure was a bit high because we were going through a lot of subjects. But after the first year, so it was more chill. I came into the campus, I explored the campus, these clubs, then explored activities, and it was very fun making new friends, doing assistantship works, working together with professors. It was a great experience. And after that placement prep time was a bit hectic, but eventually it will pass on. Eventually, after placement is over, then that time is a great period for you. So you can explore everything, like you can play badminton, you can play tennis, everything, every door is open for you. So most people, what they do is after placements, they are like free birds. So they work very less and they enjoy life very more. So hardly most people explore everything. I saw people playing basketball who never used to touch the ball. Some people playing badminton whole day, whole out. Some people going to the gym. Many people go to the gym. Many people go try different workouts, running workouts, swimming workouts. So you will get a lot of exposure, and you can attend talks also. Like the risk event went few days ago. That was a great. IIT में इवेंट का तो कमी नहीं है. इवेंट का कोई कमी नहीं है. हो ही जाता है. मतलब कल्चरल, एजुकेशनल, मतलब स्पोर्ट्स कोई भी पॉइंट पे बोर नहीं होंगे. तुम्हें हर वक्त अगर तुम चाहो तुम एंगेज रह सकते हो किसी ना किसी काम से या किसी ना किसी इवेंट से. में जो वाइब्रेंट कल्चर है ना वो बहुत मस्त है. ये जो इवेंट्स है ना इसमें तो और भी ज्यादा होता है. मतलब हर 5-6 दिन में कुछ ना कुछ तो होता ही है. ये चीज तुमको आईआईएससी में नहीं मिलेगा. ठीक है. ये मतलब इसके लिए हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं आईआईटी को. तो तुम कभी भी बोर नहीं होगे. जितना भी प्रेशर रहे पढ़ाई का तो प्रेशर रहेगा ही, बट उसके बिना मतलब उसके अलावा जो एक्टिविटीज रहता है वो बहुत सारा होता है. So after spending 3 years, so what do you think that MTech TA or MTech RA, which ones would be candidates' first choice for IIT Bombay? So actually that is a tricky question. So ये डिपेंड करता है तुम्हारा करंट सिचुएशन में. अगर तुम्हें सपोज तुम्हारा फैमिली प्रेशर है, तुम्हें 2 साल में जॉब चाहिए ही चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, तो in that case I will ask you to take MTech TA only because one extra year will be saved and that time you can income and support your family. But अगर तुम्हारा ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है और अगर तुम्हें like old IITs एक्सप्लोर करना है और बहुत टाइम से हर एक कोर्स अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, रश नहीं करना है, तो यू कैन टेक द 3 year कोर्स. So what happens is 2 years कोर्स में ना वो बहुत टाइम जल्दी निकल जाते हैं. बहुत हेक्टिक रहता है. बहुत हेक्टिक रहता है. तो एक शायद एक ईयर में वो लोग 7-8 कोर्सेज करेंगे, तो वहाँ पे तुम्हें 5 करोगे तो चल जाएगा. ठीक है. तो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो तुम इंडिविजुअल सब्जेक्ट को अलग से देख सकते हो. और क्योंकि तुम्हारा एमटीपी 3rd ईयर में है, इनके पास बहुत कम टाइम है. इनको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही
इनको डिसाइड करना है कौन से प्रॉप एकदम। किसके अंदर। सेमिनार तो के लिए हाँ हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग AIML में जाएंगे या थ्योरी पूल में जाएंगे या सिस्टम्स में जाएंगे। तो सेमिनार के पहले हम लोग को चूज करना पड़ता है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही हम लोग को चूज हाँ करना पड़ता है, जो इन लोगों को थोड़ा बाद में करना पड़ता 1.5 इयर्स के बाद है। तो फोर्थ एक सेम साल में एक्स्ट्रा चूज मिलता है, करते हैं। एक साल एक्स्ट्रा मिलता है वो चूज हाँ करने के लिए कि तुम कौन से डोमेन में तुम्हारा हाँ प्रेफरेबल है। ड्यूरिंग दैट टाइम तुम किसी भी प्रॉप के अंदर R&D कर सकते हो कि हाँ जानने के लिए कि वो कैसे पढ़ाते हैं, आई उनके थिंक अंदर 2 गाइडेंस। R&D हम लोग को अलाउ है हाँ ना। 2 R&D ले सकते हो तुम, एक दो अलग प्रोफेसर के अंदर भी ले सकते हो, एक प्रोफेसर ताकि के हाँ अंदर भी ले देख सकते हो, कोई और भी। रोज एनालाइज करके तुम चूज कर सकते हो यस किसके यस। अंदर तुम्हें जाना है। सो ये तुम्हें बहुत सारे फ्रीडम देते हैं और एक्स्ट्रा टाइम का फ्रीडम तो है ही। और ऊपर से गुड थिंग इज देयर इज नो डिफरेंस इन प्लेसमेंट, सो यस दैट इज आल्सो अ गुड पार्ट एंड मोस्टली दैट इज इट। या so means each and every course curriculum has some pros and cons, हाँ and you should think about yourself and your condition and ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारा क्या कंडीशन है। yes अगर तुम एक्स्ट्रा ईयर देने के लिए रेडी हो, और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने के रेडी हो, तो इट्स अ वेरी गुड कोर्स, सो यू विल feel less burnt out. yes yes You will enjoy your life more, you will know its subjects more deeply. एकदम So that depends entirely on you, your priorities. So if your entire priority is placements and Yes. you are getting TA and RA both in IIT Bombay, then I would tell you to take TA only. work, yes. But suppose you are not getting call from an old IIT TA-ship program, so definitely I will it will be a no-brainer to choose IIT B RA Yes, or yes, any three yes, other MIS yes. course in top IITs. So it will be a no-brainer. मैं IIT बॉम्बे CSE का टॉप रखना हाँ IIT Bombay is basically is no doubtedly, actually not basically, Yeah. IIT Bombay is no doubtedly one of the topmost institute in the countries, and CSE is the topmost branch. Yes. So I don't think you need to think twice before any 2-year or 3-year course. yes Yeah. and I think overall worldwide ranking भी बहुत अच्छा है। Yeah, worldwide ranking for I CSE think is around 47, 49 या 47 है, तो सोच लो अभी। सोचो। So yeah, that's all. That's everything about IIT Bombay MTech RA course. I think this video will be helpful to you, and please subscribe कर दो चैनल को हाँ। and जितना हो सके शेयर कर दो ये वीडियो को, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक शायन और मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिए। हाँ, सो most of the topics. हाँ तुम्हें और कुछ जानना हो तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो हम लोग विल ट्राई टू रिप्लाई इट बाय आवरसेल्व्स। एंड अगर तुम लोग को और भी क्वेरीज है तो हम लोग का लिंक्डइन प्रोफाइल हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो उधर भी तुम लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो अच्छे से पढ़ाई करो एंड अच्छे से सोच के काउंसलिंग में देखना, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी होता है काउंसलिंग। ये बहुत ट्रिकी तो होता है। तो काउंसलिंग के बारे में अगर तुम लोगों को वीडियो चाहिए तो बोलना, मैं वो भी बनाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो या दैट्स इट, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्रभु। थैंक यू।